गुड इवनिंग गाइस। स्टार्ट हो गया। Hey, very good evening guys to all of you. How are you all doing? Welcome to the part 9 of the formula revision series for chemical reaction engineering. We were discussing, good evening Shitej, good evening everyone. So as we were discussing multiple reaction system in last part, we started our discussion on that. So we will continue that from their part only. And today we will talk about the kinetics and designing of parallel reactions. Yesterday we discussed for the series reaction. Today we will talk about the kinetics and designing of parallel reaction. Okay. So as you know, till now we have discussed the multiple reactor system, and with today multiple reaction system will also be completed. So parallel reactions की बात करते हैं. So parallel reactions से पहले these are the multiple reaction system where the design characteristic is product distribution, or you can say the design parameter. So what is parallel reaction? So parallel reaction you can define as the reactions where a set of reactants or a reactant gives two or more products from different reaction paths, or you can say mechanism, simultaneously. Okay, the meaning is, suppose there is a reaction A gives T plus C. This is a reaction where a reactant gives two or more products, but following the single path. And here, this is single reaction system, example of single reaction system. But in parallel reaction, we get two or more products from two different reaction paths, you can see. And thus, it will be the multiple reaction system. So here you can understand why multiple reaction. So here we know we will be having more than one rate constants. Like for minus Ra, if you write, it will be K1 Ca power alpha plus K2 Ca power beta. If apparent order is alpha and beta in respective paths. Rb will be equal to K1 Ca power alpha and Rc will be equal to K2 Ca power beta. You know that. Okay. In case if anyone is watching this for the first time and have any doubt ki how we are writing the rate equations, so you can follow the part 2. In part 1 or part 2, we have discussed this in proper details, how to write the rate equations.
Although these are formal revision classes, but CRE is 50% CRE is all about writing the rate equations. उसके बाद तो सिर्फ mathematics होता है. Okay. So you can see more than one rate equations. And if you say कि sir K1 K2 अगर same हुआ तो still it's fine. If K1 and K2 are same means दोनों जगह अगर आप K भी ले लेते हो तो भी क्या होगा कुछ. अगर आप यहाँ पे भी K ले लो, यहाँ पे भी K ले लो, तो ये हो जाए RB will be KCA, RC will be KCA, कि apparent order भी same है मान लो. ओके, KCA 1 है. माइनस RA तो नहीं होगा ना, माइनस RA क्या हो जाएगा KCA प्लस KCA, तो डिफरेंट हो गया. That's how you can understand this. Okay, so I hope the things are clear. यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन की, उनकी काइनेटिक्स समझते हैं. You know that for first order parallel reaction, first order parallel reaction you can take like A gives R, A gives S, this is K1, order is 1, this is K2, order is 1. I hope you know in any reaction above the arrow we write rate constant and below the arrow we write order of reaction. Usually this is the standard. Okay. So here what will be the rate equations? So you know for my A it will be minus RA equal to K1 CA plus K2 CA, or you can write it as K1 plus K2 times of CA. RR will be equal to K1 CA only and RS is equal to K2 CA only. Okay, so here let's find out the kinetic equation. So for A, if you do, so you know for CVRS, all these things we are doing for CVRS. So minus RA can be written as minus dCA by dt, which will be equal to K1 plus K2 equal to CA from Power's law. You know that. So here you can solve this. You know the limits. If you take variable separable method, you apply. You can write the things like this. And now you can take the limits at reaction time T0, concentration of A in the reaction mixture will be 0. At any time T, it will be CA. So on solving this, you will get CA ln CA naught over CA is equal to K1 plus K2 times of T. So this is the kinetic equation in terms of A, or you can say concentration profile for A. And you know this thing, you can also write it as Ca equal to Ca naught times of e to the power minus K1 plus K2 times of T. This is for A. Similarly, you can do it for R, where you know RR can be written as dCr by dt for CVRS, which is equal to K1 CA. Here you can put the value of CA, so that will be Ca naught into e to the power minus K1 plus K2 times of T. Now if you integrate this, now you can do the definite integral or indefinite integral, doesn't matter, that is your choice. Ultimately the result will be same because the limits. So if you do normal integral, so you know CR will can be written as K1 Ca naught divided by minus of K1 plus K2 into e to the power minus K1 plus K2 times of T plus C1. You know the integration constant. Now you can use the initial condition since only one integration constant is there.
From initial condition, we know that at reaction time t0, concentration of R, that is the product, let's say 0. You can take CR naught as well if it is given, but by default, let's say CR naught, CR as 0, CR naught as 0. So you can see C1 will become here, this is 0 plus K1 Ca naught divided by K1 plus K2. So you can see CR will become K1 Ca naught over K1 plus K2 times of 1 minus. I am putting this value of C1 here, and on rearrangement, or directly I am writing, you can check by yourself. It will be 1 minus e to the power minus K1 plus K2 times of T. This is the concentration profile or kinetic equation, you can say, in terms of R. Similarly, you can do it for S, where you know Rs is dCs by dt, that is K2Ca. So you can see in Cr and Cs only K1, K2 is different. So here, when you will solve, you are supposed to get Cs is equal to, just replace K1 by K2. See how easy it is. Now here, ultimately we got for the reaction, A gives R, A gives S, K1, K2, RR equal to K1 Ca, RS is equal to K2 Ca. तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशंस आ गई, Ca इक्वल टू Ca नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 टाइम्स ऑफ T. Cr is equal to K1 Ca naught over K1 plus K2 times of 1 minus e to the power minus K1 plus K2 times of T. And Cs is equal to K2 Ca naught over K1 plus K2 times of 1 minus e to the power minus K1 plus K2 times of T. Okay, now if you will draw these equations on a graph, which you can do it, so you will get the concentration profiles. ठीक है, तो वो आपको कैसे मिलेंगे? See, if you draw the graph between concentration versus time, see if K1 is greater than K2, another case would be like K1 is less than K2, and there would be a case if K1 is equal to K2. Okay, तो Ca के लिए तो आपको पता है T0 it will be Ca naught, it will decrease exponentially like this. For R, it will increase exponentially like this. And since K1 is more, so you can see Cr and Cs equation is same. The only difference is K1 and K2. So if K1 is more, the concentration of R will be more as compared to S. और S का हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से. And on the other hand, if K1 is less than K2, you know then concentration of R will be something. It will increase exponentially, and concentration of S will be more because K1, K2 is more than K1. All these will start from origin. Okay, and if both are equal, तो CA का तो सेम ही रहेगा सब कुछ, you know.
but for R and S, the profile will be same. They will coincide each other. Basically, their concentrations will remain same. You can see from the equations. Simple. This is the case of MF parallel reaction kinetics. अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आता है कि सपोज आपसे अगर हम बोले कि मैंने आपसे कहा चलो एक लैब में चलते हैं और लैब में हमने एक रिएक्टर है, इट कुड बी एनी रिएक्टर, वी आर नॉट गोइंग इन दोज डिटेल्स फॉर नाउ. आई हैव इंट्रोड्यूस सी ए नॉट, ए इंट्रोड्यूस किया, and at the outlet I am supposed to get A, R and S. I have told you that a reaction is this: A gives R gives S, where RR is equal to K1Ca and RS is equal to K2Ca, means first order parallel reaction. And if I ask you, tell me what will be the value of K1 and K2, can you calculate? या फिर ये ना पूछ के मैंने आपसे पूछा अच्छा एक बात तो टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बोथ द स्टेप्स, है ना? K1 K2 पूछ लिया मैंने, या फिर आपसे मैंने E1 E2 पूछ लिया. क्या बताओगे? हाउ विल यू डू इट? सिंपल, सिंपल क्वेश्चन. आपके पास रिएक्टर है, ए इंट्रोड्यूस किया, ए आर एस आउटलेट में है, आप, और इट कुड बी बैच रिएक्टर, एमएफआर, पीएफआर और एनी अदर रिएक्टर, डजंट मैटर. Just tell me what will be the values of K1 and K2. And you are allowed to use any other instrument or device in the lab, है ना? बहुत easy है. See, this is very basic. You know that. तो हम क्या करेंगे? Here we know the CA naught. So for based on the reactor outlet or based on the reaction mixture inside the reactor, we can find out the values of Ca, Cr, Cs versus T. मतलब आप अलग अलग टाइम पर Ca, Cr एंड Cs की वैल्यूज मेजर कर सकते हो. T0, 1, T1, T2 and so on. Just take the sample at different time intervals, and from that sample you can find out the concentration of each and every component using chromatography, titration or any other method. You know that very well, है ना? तो आपके पास concentration versus time का एक data आ जाएगा. With the help of that data, what you can do, you can draw a graph between ln Ca naught over Ca. See, I need to find out K1 and K2, two unknowns. I need two equations. So let's draw a graph between ln Ca naught versus Ca naught over Ca versus T. So you know that that graph is going to be a straight line, as you have seen the kinetic equation for it, y equal to mx, and the slope of that graph will be k1 plus k2. तो एक equation आ गई. Second equation के लिए you can draw a graph between Cr versus Cs. Okay, आप बोलोगे Cr versus Cs का ग्राफ वो क्या है? समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो डजंट मैटर. Just see this. We know that dCr over dt is equal to K1Ca and dCs over dt is equal to K2Ca. Take the ratio. So you will get dCr over dCs, dt will get cancelled, Ca will get cancelled, equal to K1 over K2. Now integrate this. So you will get Cr equal to Cr minus Cr naught equal to K1 upon K2 times of Cs minus Cs naught. Okay. If Cr naught Cs naught is 0, तो आपको पता है इक्वेशन क्या बन जाएगी?
Equation would be like Cr equal to K1 upon K2 times of Cs. If Cr naught and Cs naught both are 0, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा, straight line. There also you can measure the slope. That will be K1 upon K2. I hope you are understanding this. है ना? You got the two equation. K1 plus K2 equal to slope 1. K1 upon K2 equal to slope 2. With the help of those two values, you can calculate K1 and K2. Simple. And you know this reaction is taking place at certain temperature T. ठीक है? तो आपको K1 and K2 at temperature T मिल गया. Now perform the same reaction at any other temperature. Let's say T2. तो आपको K1 and K2 for both the steps मिल जाएंगे for different temperature. Correct? And when you will have the K1 and K2 for different temperature, so with the help of Arrhenius equation, you can find out the activation energy as well. I hope you guys are understanding this. You know the Arrhenius equation? By default. Simple. So I hope you are understanding this. See, this is the variation they can do. Such an interesting fact. This year only in 24 they ask about the K1 K2 और मे बी 23 में पूछा था पता नहीं. ठीक है, वो आप लोग यू देख सकते हैं. PYQs तो सॉल्व करोगे. We will also take one PYQ series. तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं. तो maybe this year they can ask you about E1 and E2 for next year. But for that they will give you some data. Obviously GATE exam में तो आप experiment नहीं कर पाओ. So they will give you some experimental data to find the things. See, this is the kinetics of parallel reaction. Okay, यहाँ पे अब एक और variation clear होना चाहिए about the graph between CR and CS. See, if CR naught is 0, CS naught is also 0. So you guys know the graph is something like this, a straight line. If CR naught is 0, but CS naught is non-zero, then doesn't matter. So you know the graph on the y-axis will be starting from here. Y-axis CR के लिए y-axis पे CR है तो CR naught is 0, but CS naught is non-zero, and there will be some intercept on x-axis. तो आपका जो कर्व है वो कुछ यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. Again it will be a straight line. Similarly, if CR naught is non-zero, but CS naught is 0, in that case, you know, there will be an intercept on y-axis. The curve will start from here. And if CR naught and CS naught both are non-zero, then there will be an intercept on x-axis as well as y-axis. तो यहाँ पे आपका ग्राफ कुछ ऐसे स्टार्ट होगा. Okay, so I hope you understand these things very well. अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिजाइनिंग ऑफ पैरेलल रिएक्शंस की. When we talk about the designing of parallel reaction, तो यहाँ पे हमारे दो टूल आते हैं, दो मेथड आते हैं जिनकी हम बात करते हैं फॉर पैरेलल रिएक्शन. One is selectivity
second is yield. तो पहले हम selectivity की बात कर लेते हैं. So you know here selectivity is categorized in two parts. One is instantaneous selectivity, which is denoted by capital S, and second is overall selectivity, which is denoted by capital S bar. Okay. You know that instantaneous selectivity, sometimes also known as fractional selectivity, is defined as the reaction rate, or you can say rate of reaction of desired product to the reaction rate of undesired product. तो यहाँ पे सपोज हमारी रिएक्शन है A gives R, A gives S, R is the desired product and S is the undesired product. So instantaneous selectivity will be like SR by S equal to rate of reaction for desired product, that is RR, over rate of reaction for undesired product, that is RS. And here, you know, rate of reaction can be written in terms of concentration and rate constant K. So you can also write it as K1 Ca upon K2 Ca. So we can say that power alpha, power beta is available. Order is alpha and beta. Rate constant K1 and K2. So in this case, you can see instantaneous selectivity will depend on reaction conditions, because this is the concentration of a rate constant K because of the rate of reaction. अब rate of reaction की बात कहाँ होती है? You know that we talk about the rate of reaction only and only inside the reactor, means reaction condition. So it will depend on the reaction temperature, it will depend on the concentration of reactants inside the reaction mixture, inside the reactor. So, and you know that rate of reaction is the function of temperature and concentration only, not the reactor type. So I can also write it as instantaneous selectivity is independent of type of reactor. Okay. Next बात करते हैं overall selectivity. As the name suggests, overall. Overall means ऊपर ऊपर से, बाहर बाहर से हम देख रहे हैं चीजों को. तो आपके पास कोई रिएक्टर है जिसमें आपने A भेजा, आउटलेट में आपको A, R एंड S मिला. इसी के बेसिस पे आप बता रहे हो डेटा. ओवरऑल सेलेक्टिविटी मेरा S बार हो जाता है total moles for CVRS. This definition, all these are valid for CVRS. Total moles of desired product formed to the total moles of undesired product formed. Okay, that means
Total moles of R formed will be Nr minus Nr naught. Total moles of S formed will be Ns minus Ns naught. So that's how you can write. And here in subscript, we will write like this, R by S. That means R is desired, S is undesired. So in exam or in any question, if they don't mention that this is desired or undesired, doesn't matter. Check the selectivity. Based on the selectivity itself, you will understand. The numerator value will be for desired and denominator value for undesired. And you know, for CBRS, V is equal to V naught. So if you multiply and divide this by volume, so you know V equal to V naught. You can also write it as CR minus CR naught divided by CS minus CS. Okay. So that is overall selectivity. And that is my purpose, you know. You should know here. Overall selectivity and instantaneous selectivity, you cannot relate directly. Okay. But you can say that this is some function of instantaneous selectivity. Overall selectivity is some function of instantaneous selectivity. How? As instantaneous selectivity increases, overall selectivity will also increase or vice versa. ठीक है, तो that is my objective. मुझे क्या करना है, मुझे overall selectivity high रखनी है. And you know that to keep high overall selectivity, we must increase the instantaneous selectivity. Simple. I hope you are understanding this. अब वो कैसे करते हैं, क्या कर सकते हैं, वो देखते हैं. तो इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी की बात करते हैं. सपोज हम एक रिएक्शन लेते हैं. फॉर एग्जांपल, A plus B gives R, A plus B gives S, where RR is equal to K1, CA power alpha 1, CB power beta 1, and RS is equal to K2, CA power alpha 2 into CB power beta 2. Okay, simple. तो आपकी इंस्टेंटेनियस सेलेक्टिविटी क्या होगी? S, that will be equal to RR over RS, or you can write K1 upon K2 times of CA power alpha 1 minus alpha 2 into CB power beta 1 minus beta 2. So how I can increase instantaneous selectivity? That is the question. तो यहाँ पे आपके several cases आते हैं. Like first case, you can see if alpha 1 is greater than alpha 2 and beta 1 is less than beta 2. So you can see instantaneous selectivity if you check based on concentration only. है ना? You understand? If I want to see the effect of one parameter, I have to keep all other parameters constant. यहाँ concentration की बात कर रहे हैं. Alpha 1 greater than alpha 2 and beta 1 greater less than beta 2 है तो you know overall instantaneous selectivity will be like CA power alpha 1 minus alpha 2, that means positive, and CB power beta 1 minus beta 2, that is negative. और अगर ऐसा केस है तो you can see if you increase the CA, S will increase, and if you decrease the CB, S will decrease. So I have to keep high CA, or you can say I have to increase the CA and I have to decrease CB, or you have to keep low CB. Simple. इसी में second case आ जाता है आपका. Suppose if alpha 1 equal to alpha 2 है and beta 1 greater than beta 2 है, then you can see selectivity will be proportional to CA power 0 and CB power positive. तो यहाँ आप बोलोगे independent of CA and keep high CB.
I hope you understand these things. Similarly, you can see all other variations for concentration. हम उन सब में नहीं जा रहे. These two are sufficient to understand. If any one of you have any doubt in any of the case, just mention in the comment box or in the live chat. Now, third case देखते हैं. टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं. अब टेम्परेचर की जब बात कर रहे हैं, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो S is proportional to K1 upon K2. तो यहाँ पे मेरा पर्पस क्या है? दिस रेशियो शुड बी हाई. And how I can increase the ratio? Either by increasing K1 or by decreasing K2. अब यहाँ ध्यान से समझना. You guys understand this? K is the function of temperature. As per the Arrhenius theory. And you know that as temperature increases, K increase, and temperature decreases, then K will decrease. You know that. तो ये जो रिएक्शन है हैपनिंग इन अ रिएक्टर, if you increase the temperature of the reactor, so K1 and K2 both will increase. And if you decrease the temperature, then K1 and K2 both will decrease. So what we will do? You know that. अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आ जाता है activation energy. K is a function of temperature, but K also depends on activation energy. If activation energy is variable. ठीक है. बट अगर एक्टिवेशन तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ देखते हैं. यहाँ पे हमारा थर्ड केस हो जाता है E1 is greater than E2, एंड फोर्थ केस हो जाता है इफ E1 is less than E2. यहाँ पे आप एक चीज तो समझते हो, एज पर द आर्हेनियस थ्योरी, ln k is equal to ln k naught minus E over RT. दिस वाज द क्वेश्चन. एंड यहाँ पे जो हमारा ग्राफ था वो कुछ ऐसे आया था, वेयर द स्लोप पास माइनस E by R. करेक्ट. तो अब यहाँ से आप देख सकते हो इफ E1 is more than E2, then just check the graph. Slope is depends on E, activation energy. So high activation energy means high slope, more steeper. E1 is large, E2 is small. So the curve for K1 will be more steeper as compared to curve for K2. I hope you understand this. है ना? अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, if you change the temperature by doing this much of change in the temperature, K1 value will change by this much, such a large extent. And for the same change in temperature, the percentage change in K2 value is relatively small. ठीक है. इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है, आप ऐसे सोच सकते हो. सपोज एट एनी टेम्परेचर T1, K1 की वैल्यू है 5, K2 की वैल्यू है 2. नाउ इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, percentage change in K1 will be more. You can see this as compared to K2. Or in simple terms, you can say K1 will increase more as compared to K2. है ना? Suppose K1 डबल हो गया 10 times और K2 1.5 times increase हुआ, 3 बन गया. तो you can see the ratio. इस केस में T1 के लिए ये रेशियो था 2.5, अब ये रेशियो हो गया 3.3. तो you can see ratio has increased. That means selectivity will increase. So what will I do? I will keep high temperature in such scenario.
और अगर रटना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, अगर न्यूमरेटर का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर हाई रखेंगे, एंड डिनोमिनेटर का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर लो रखेंगे। लाइक हेयर इफ यू सी E1 लेस देन E2, तो यहाँ पे क्या केस होगा, K2 का कर्व, E2 इज मोर, द K2 कर्व विल बी मोर स्टीपर as compared to K1. Now here if you do make some change in temperature, तो you can see अगर मैं increase कर रहा हूँ तो you can see K2 will increase more as compared to K1, or you can say percentage change in K2, percentage increase in K2 will be more as compared to K1. तो अगर ऐसा केस हुआ तो आपका रेशियो तो डिक्रीज हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड दैट, है ना? अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो। इफ E1 इज लेस देन E2, यहाँ पे देखना K1/K2, K1 मेरा 5 है, K2 2 है। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, K1 इंक्रीज होके सपोज बन गया 8, ठीक है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स, 5 से 8 हो गया, लगभग 30%, 60%, ओके, जितना भी है वो आप देख सकते। K2 मान लो मेरा डबल हो गया, K1 डबल नहीं हुआ बट K2 डबल हो गया, तो रेशियो क्या होगा, पहले 2.5 था, अब क्या बन गया 2, डिक्रीज हो गया ना, मतलब एस डिक्रीज हो जाएगा, तो ये तो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। बट इसी केस के लिए यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो बोथ विल डिक्रीज, तो सपोज K2 हाफ हो जाता है एंड K1 डिक्रीज होके 5 से 4 हो गया, देन you can see ratio was 2.5, now the ratio is 4, ratio increase हो गया means selectivity will increase. I hope you are understanding. So we will keep low temperature means we will decrease the temperature. Clear? इसलिए मैंने बोला न्यूमरेटर का एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर का ज्यादा है तो डिक्रीज करेंगे, ऐसे आप सोच सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज केसेस। इसके ऊपर आपके बहुत क्वेश्चन आए, इफ यू सी लास्ट 25 ईयर पेपर्स, आपके ऑलमोस्ट 7-8 क्वेश्चन यू विल फाइंड ऑन सच केस, ठीक है। अब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्या है वो देखते हैं, तो एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सपोज आपका कोई रिएक्शन स्कीम गिवन है, ए गिव्स बी, ए गिव्स सी, सी गिव्स डी, बी गिव्स डी। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है आपका 120, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है 100, यहाँ पे है 200, और यहाँ पे है, ये 150 है और ये 200 है, ऐसे मान, ठीक है। एंड लेट्स से माय डिजायर्ड प्रोडक्ट इज सी, तो इसे 120 ना लेके एक काम करो, चलो 120 लो, क्या फर्क पड़ता है, ज्यादा तो है ही। तो सी के लिए आपको बताना है व्हाट विल बी द सुटेबल रिएक्शन कंडीशन, और सुटेबल टेम्परेचर प्रोफाइल क्या हो, सोचो आप लोग, ट्राई करो। सी यहाँ पे देखो रिएक्शन स्कीम गिवन है, ए गिव्स बी, ए गिव्स सी, ब्रेक डाउन कर लेते हैं पहले, डिजायर प्रोडक्ट के लिए बात कर रहे हैं वो सी है, एंड ये इट इज कमिंग फ्रॉम ए, बट ए इज ऑल्सो गिविंग बी, तो इसलिए हमने वो दोनों स्टेप लिख लिए, ये 120 है ये 100 है, ओके। तो सी इज द डिजायर प्रोडक्ट, नाउ सी दिस, if you will write the selectivity, how will you write? You will write as C upon B, desired upon undesired. C अगर desired है तो B undesired होगा,
what will be the rate constant? Rate constant for C divided by rate constant for B. ऐसा कुछ selectivity बनेगा. अब activation energy देख लो. Activation energy for C is less than that of for B. So it means I will prefer low temperature, because if I keep the temperature low, then Kc will increase more. Sorry, the Kc will decrease less as compared to Kb. Yes. अगर एक्टिवेशन एनर्जी सी का कम है और टेम्परेचर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो के सी में जो डिक्रीमेंट होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू के बी, तो अल्टीमेटली रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, है ना. आई विल कीप लो टेम्परेचर. ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको इसमें ध्यान से देख पाओगे कि सेकंड स्टेप भी है. क्या? जो मेरा सी है वो फर्दर डिसअपियर होके डी भी तो बना रहा है. What I want, C is the desired. Obviously, the C should stay. It should not get disappeared in the D. अगर डिसअपियर हो गए तो फायदा क्या होगा, है ना. तो यहाँ पे आप देखो के सी, आप फॉर सिंपल समझ सकते हो. व्हाट आई वांट फॉर्मेशन ऑफ सी टू बी मोर देन द डिसअपियरेंस ऑफ सी. दिस इज आई वांट. अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये से सपोज मैं लेता हूँ के सी और इसे मैं बोल देता हूँ सपोज के डी. ठीक है, ये स्टेप के डी ही बोल देंगे ना. डिसअपियरेंस हो रहा है जिसमें सी का, या फिर आप चाहो तो के सी डैश बोल दो, डजेंट मैटर, आपकी चॉइस है. The formation of C depends on Kc and disappearance of C depends on Kc dash. And I want Kc to be more than Kc dash. है ना. अब यहाँ पे आप एक्टिवेशन एनर्जीज देखो, इसका 100 है, इसका Kc डैश है. अगर मैं यहाँ, हम लो टेम्परेचर से स्टार्ट किया, अगर अभी भी हम लो टेम्परेचर ही रखेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज डिक्रीज इन Kc will be more. Kc will decrease, but the decrease in Kc will be less than the decrease in Kc dash. Kc dash will decrease more. So that means the appearance of C will decrease as compared to formation of C. So I will keep low temperature throughout. Clear? I hope this is clear to everyone. ठीक है. बट यहीं पे सपोज अगर एक्टिवेशन एनर्जी इस स्टेप का लेट से 50 होता, सपोज लेट ये 100 है और ये 50 है. तो you know Kc represents formation of C and Kc dash represents disappearance of C. We are coming from the low temperature profile. अगर अभी भी मैं लो रखूंगा टेम्परेचर तो क्या होगा? इफ लो टेम्परेचर आई कीप, व्हाट विल हैपन? इफ स्टिल आई कीप लो टेम्परेचर, तो यू नो Kc will decrease more as compared to Kc dash, क्योंकि इसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है. तो ग्राफ भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो आप चेक कर सकते हो ln k वर्सेस 1/t का. Kc का जो ग्राफ है वो स्टीपर होगा एज कंपेयर टू Kc डैश. तो इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर तो Kc विल डिक्रीज मोर एज कंपेयर टू Kc डैश. करेक्ट. तो वो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि डिफॉर्मेशन ज्यादा डिक्रीज हो रहा है. तो नाउ व्हाट विल आई डू? नाउ आई विल प्रेफर हाई टेम्परेचर, because if I prefer high temperature, so you can see Kc will increase more as compared to Kc dash. So now what will be the temperature profile? Low to high means increasing. I hope it is clear. ठीक है. तो गिवन क्वेश्चन के लिए तो हम लो रखेंगे थ्रू आउट, बट इस केस के लिए लो टू हाई. So that's how we can do the things related to selectivity.
बाकी यील्ड की बात करें तो यील्ड आपको पता है, यील्ड का मेथड, यील्ड का सिग्निफिकेंस, यील्ड सिग्निफाइज द फ्रैक्शन ऑफ ए रिएक्टेड इन ईच स्टेप। ठीक है, तो वो सब बात की बात है। इसमें एक चीज और रह गई है, थोड़ा टाइम आज ज्यादा लग गया हमें, तो वो डिस्कशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि हाउ वी कैन कीप, ये तो हमने देख लिया व्हाट वी शुड डू, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ वी कैन कीप हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द यील्ड मेथड प्रॉपरली। ठीक है, तो वो नेक्स्ट सेशन में ही करते हैं डिस्कस। आज 5-10 मिनट में तो हो ही नहीं पाएगा, तो क्या फायदा। ओके, बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, किस चीज के लिए पूछ रहे हो सौम्य रंजन? बाकी आपका जो डाउट है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो बाद में। मतलब किस चीज में बी फार्मा कैंडिडेट्स एलिजिबल है, किस चीज के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार आप क्लियर करना। तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। पहले आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ जो आपको ऑलरेडी आइडिया है, आप में से मोस्टली लोगों को, बट स्टिल जो लोग नए हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 है 24 में अक्रॉस द डिफरेंट स्ट्रीम्स, यू कैन सी। हमारा एक ऑफर चल रहा है विच इज वैलिड टिल टुडे, दिवाली ऑफर, दिवाली उत्सव, मेगा दिवाली सेलिब्रेशन। आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाकर, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप अलग से भी चेक कर सकते हो। वहां पे जाके आपको व्हील स्पिन करने का चांस मिलेगा, एंड यू मे गेट, यू मे विन ऑल दीज थिंग्स, स्मार्ट वॉच, एक्सबॉक्स, आईफोन, मर्चेंडाइज, मैकबुक और डिस्काउंट्स। ओके, आपको क्या करना है, वहां पे जाके आपको कोड यूज करना है ACE009, माई एजुकेटर कोड। तो अगर आप एजुकेटर कोड यूज करते हो तो उससे आपको ये बेनिफिट है कि आपको डायरेक्ट पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, जिसमें हम आपका वीकली मॉनिटरिंग भी करते हैं, एंड वी टाइम टू टाइम हेल्प यू टू टू strategize your preparation methods. Okay, this is my team on an academy, and you know, अभी हमारा 55% ऑफर भी चल रहा है टिल टुडे, जिसमें आपको 5499 में 3+1 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा इफ एनी वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर ओनली फॉर गेट एग्जाम 2025। और ये EEC नहीं, CH के लिए भी वैलिड है, सभी ब्रांच के लिए। ठीक है, यू जस्ट नीड टू यूज माई एजुकेटर कोड ACE009। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी हमारे क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट हो चुके हैं 28 सितंबर से, नेक्स्ट बैच हमारा 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। सो see you on board, till then bye bye, take care. If you have any doubt, any query, you can mention in the comment box, we will discuss, or otherwise you can join my telegram channel, link you will find in the description, that is gate with telegram t.me/gate with ace. Okay, so see you guys.